Okay, but what we are going to study in this chapter is that is cell, the unit of life. Okay, we are going to know more about the cells. Okay, what are these cells? When these cells was discovered, who was the person who was discovered cells for the first time, और कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सेल्स को फर्स्ट टाइम देखा. ठीक है, किसने डिस्कवर किया, किसने सेल्स जो है उसको फर्स्ट टाइम जो है देखा अंडर द माइक्रोस्कोप. दैट वी विल गोइंग टू टेल यू that on the basis of these cells how many type of organisms are there. ठीक है, you have heard this term so many times in your lower classes that we have unicellular and we have multicellular type of organisms. So in this chapter we are going to study in detail about these organisms. That some of the organisms, if we call them as unicellular, this means they are made up of only a single cell. And if some organisms they are made up of many cells in a characteristic way, then these organisms are known as multicellular or advanced type of organisms. Okay, in this chapter we are going to discuss with you in detail about the various types of cell organelles that are present inside the cell. Okay, we will also explain you a jelly-like substance. It is also present in the center of the cell. Okay, किसी भी cell जो है उसके अंदर जो एक jelly-like substance present होता है, which is known as cytoplasm, and this cytoplasm is the site for various type of chemical reactions that are occurring in the cells. Okay, beta. So there are two types of cells. It may be the prokaryotic cells, which are considered as the primitive type of cells, and another type of cells are known as the eukaryotic cells. So you must remember in your mind that eukaryotic cells are actually those cells which are the advanced type of cells, and two features that are associated with the prokaryotic and eukaryotic cells. In prokaryotic cells, which are generally found in case of bacteria, so bacterial cells are the example of prokaryotic cell, a well-defined nucleus is absent and membrane-bound organelles they are also absent. ठीक है बेटे, एक prokaryotic cells में ना तो एक well-defined nucleus होता है, ना ही एक membrane-bound organelles होती है. ठीक है, but the nuclear material it is freely suspended in the cytoplasm. It is not scattered in the cytoplasm. It is only accumulated in a specific region in the cytoplasm, which is known as nucleoid. जिसको हम क्या कहते हैं, nucleoid कहते हैं. But in case of eukaryotes, both the things are present. Well-defined nucleus is also there, and membrane-bound organelles they are also present. Okay, बेटे. इसके अलावा देखो सारी cell organelles जो हैं उसमें different type of cell organelles आ जाती हैं. As I have discussed with you that there is a ground substance that is present inside the cell, and it is known as the cytoplasm or protoplasm. Okay, you know that inside the center of the cell an important cell organelle is present which control all the functions of the cell, and it is known as nucleus. So nucleus has its own nuclear membrane in case of eukaryotes, whereas nuclear membrane it is not present in case of prokaryotes. So prokaryotes do not have well-defined nucleus and eukaryotes have. Okay, but inside the nuclear membrane, in case of eukaryotes, another ground substance is present, which is known as nucleoplasm. अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि what is protoplasm, then you must know that protoplasm is the sum of cytoplasm and nucleoplasm. ठीक है, when you see cytoplasm, that is the ground substance which is outside the nuclear membrane but within the cell membrane or plasma membrane. So you see a variety of cell organelles that are present inside it. ठीक है, कई तरह की सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जांपल उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रियास नजर आ जाएंगे. ठीक है, आपको गोल्गी एपैरेटस नजर आ जाएंगे, आपको राइबोसोम्स पता लगेंगे, आपको सेंट्रोसोम्स पता लगेंगे, आपको और कई कुछ जो है यहाँ पे नजर आता है. तो ऑल ऑफ दीज कम्स अंडर द सेल ऑर्गेनेल्स. तो सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं उसके अलावा हर एक सेल जो है इट हैज इट्स ओन मेम्ब्रेन which is flexible in nature and semi-permeable in nature. So in animal cells this cell membrane is outer boundary, but in case of plant cell, in addition to the cell membrane, what is present? A thick and rigid cell wall is present. Okay, that provide additional rigidity to the plant cells.
Plant cells are rigid in nature, whereas the animal cells, they are flexible in nature because of the absence of cell wall and presence of the outer boundary known as cell membrane. ठीक है बेटे, तो देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भी क्या प्रेजेंट होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको मिडल लैमेला कहते हैं. ठीक है, याद रखिए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक लेयर प्रेजेंट है which is known as middle lamella. It acts as an adhesive between the cell membrane and the cell wall. Okay students, so now we come on the main topic. तो देखिए मेन टॉपिक के अंदर what is given in the introduction. So in the introduction it is given that when you visit your surroundings you come in contact with two type of things. ठीक है, some of the things are the living and some of the things are the non-living. So there are certain characters that are unique to a living organism. You have also studied these characters in chapter 1 of your book, The Living World. ठीक है, तो some characters that generally comes in our mind that all living organisms, they show growth and development. All living organisms, they show response towards stimuli. ठीक है, living organisms, they show movements. Living organisms, they have special type of life processes that are occurring in their body, which are vital one. It may be digestion, circulation, excretion, and so on. Okay, बेटे, तो इस तरह से कहते हैं कि there are certain features or certain characters that are only unique to the living organisms, and they are not found in the non-living things. And on the basis of those characters, you come to know that following organisms are the living one, and these are the non-living one. But one thing regarding the body of the living organism, ठीक है, when you see the body of a living organism, then you come to know that the body of each and every living organism, it is made up of very smallest type of units, and these are known as cells. So in other words, you can say that cell is the basic structural and functional unit of life, or cell is the fundamental unit of life. ठीक है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी को बनाने वाली सबसे छोटी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं. क्लियर बेटे, जिस तरह से एक बिल्डिंग जो है उसको बनाने के लिए द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज ब्रिक, उसी तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने वाली सबसे छोटी यूनिट्स जो है या प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या होती है, सेल्स होती है. ठीक है, तो हाउ मेनी सेल्स दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. Okay, whether the body of the living organism it is made up of one cell, then such type of organisms are known as the unicellular organism. ठीक है, there are so many examples of unicellular organism. बहुत सारे example हैं unicellular organisms के. ठीक है, can you give me one example of a unicellular organism बेटे? Amoeba. Yes, very good. Amoeba, paramecium, euglena. Okay, all of these they are the unicellular organisms. So as we know that they are unicellular, this means a single cell is present inside their body, and that cell is performing all the metabolic activities of the body. Okay, but if we are talking about multicellular organism, so as the name itself indicates that they are made up of many cells. Okay, and all of these cells they are performing variety of tasks. What you see inside the body of a multicellular organism, that there is a division of labor, it is found among the cells. Okay, some of the cells according to their similar type of structure and functions they perform. Okay, these functions are also the similar one. So these cells they organize themselves to form tissues in the body. And if the tissues they are also working in a coordinated fashion, having similarities in their structure and the functions they are performing, so these tissues they later form the bigger type of things which are known as the organs. And when the organs they work in a coordinated manner, then they form the organ system. So what you see inside the body of the advanced multicellular type of organism, that there is a division of labor. It actually seen in different cells of the body. Okay, and this arrangement from cells, the tissues are formed, from tissues the organs are formed, and from organs the organ systems are formed. So this increasing order of the systematic arrangement, okay, it is known as hierarchy. It is known as hierarchy. Okay, beta. Now when we proceed more in the chapter, what you see
आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज अ सेल, ठीक है, एक सेल क्या है। तो कहते हैं कि सेल क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाता है देन यू विल गिव अ सिंपल आंसर दैट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच मेक्स द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट, ठीक है। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को ही फॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाली सारी तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस में सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करते हैं, सेल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है बेटे। और इसलिए वो कहते हैं कि ये सिर्फ स्ट्रक्चरल यूनिट्स नहीं या फंक्शनल यूनिट्स भी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्लियर बेटे। तो फर्स्ट टाइम these cells they were discovered by the scientists. I am showing you the picture of the plant cell and the animal cell, ठीक है। ह्यूमंस के सेल्स भी मैंने आपको दिखाए हैं, तो एनिमल सेल के अंदर आ जाएंगे, ओके बेटे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज अ सेल, तो आप कहेंगे कि ऑल ऑर्गेनिज्म दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। So some organisms they are made up of one cell, they are unicellular, other made up of many cells, they are known as multicellular. Who was the person who first discovered the cells? तो पहली बार वो कहते हैं कि सेल्स जो हैं उसको किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक वाज द पर्सन। यहाँ पे मैंने हुक लिखना मैं भूल गई हूँ, तो आपने याद रखना नेम ऑफ द पर्सन वाज रॉबर्ट हुक, दैट इज HOOKE, हुक, ओके। ही डिस्कवर्ड द सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्होंने डिस्कवर किया सेल्स को पहली बार। उन्होंने ये सेल्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए कि ये सेल्स जो हैं वो एनिमल्स में हनीकॉम्ब्स जैसे हमें नजर आते हैं, ठीक है। जैसे मधुमक्खियां होती हैं, उनका जो छत्ता होता है जिसको हम कॉम्ब बोलते हैं, हनीकॉम्ब, उसी की तरह हमें सेल्स के बहुत सारे कंपार्टमेंट्स जो हैं वो बॉडी के अंदर जो है वो नजर आते हैं, ठीक है। लेटर देयर वर अदर साइंटिस्ट जिन्होंने ये देखा कि इट इज नॉट ओनली फाउंड इन केस ऑफ प्लांट but it is also found in case of animals too, the same honeycomb like arrangement or compartments, ठीक है। तो for this investigation or you can say discovery, रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवरी किसमें की थी, इन्होंने कॉर्क के सेल लिए थे, ठीक है बेटे। कॉर्क क्या होता है, जब कोई स्टेम पुराना हो जाता है, ठीक है, when the stem it becomes an older one, then what you see on the outer surface of the stem crushed, ठीक है, thick layer, woody layer it comes। जो आउटर सरफेस होती है स्टेम की ना, वो एक थिक क्रश्ड वुडी लेयर से कवर हो जाती है, जिसको आप कॉर्क कहते हो, ठीक है। तो कॉर्क जो है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है स्टेम में से, तो कॉर्क के सेल्स उसने लेके उसको स्टडी किया, तो उसे हनीकॉम्ब जैसे कंपार्टमेंट्स नजर आए और उसको उसने क्या बोला, सेल बोला। तो फर्स्ट टाइम सेल्स को कॉर्क सेल्स में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। उसके बाद देयर इज एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोपी, so there was another scientist and his name was Anthony von Leeuwenhoek, and Anthony von Leeuwenhoek they saw the live cells under his crude microscope, ठीक है। तो लीवनहॉक जो थे उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था और उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने लाइव सेल्स जो हैं उनको पहली बार देखा, क्लियर बेटे। उसके बाद there was another scientist and this scientist was Robert Brown, एंड रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने ये बताया कि हर एक सेल जो है उसके सेंटर में एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट है एंड दैट ऑर्गेनेल इज नोन एज न्यूक्लियस। सो दिस न्यूक्लियस इज एक्चुअली द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। ये न्यूक्लियस क्या करता है, सेल के सारे फंक्शंस जो हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, और जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती हैं या जिन भी रिएक्शंस में सेल पार्टिसिपेट करते हैं उन सारी रिएक्शंस को डायरेक्ट कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, ठीक है। सी द पिक्चर ऑफ द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक हु डिस्कवर्ड द सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ही हैज डिस्कवर्ड द सेल्स इन कॉर्क व्हिच ही ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम, ओके। तो स्टेम जो है उसमें उन्होंने कॉर्क को फर्स्ट टाइम कॉर्क के जो सेल्स है उसके अंदर जो है सेल्स देखे और उन्हें ये सेल्स जो है वो हनीकॉम्ब के चैम्बर्स या कंपार्टमेंट्स जैसे नजर आए, तो उसने कहा कि पूरी बॉडी में इस तरह के हनीकॉम्ब लाइक सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिखाए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको जो है सेल्स के अंदर क्या नजर आ रहा है, न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ओके बेटे। तो जेली लाइक सब्सटेंस इज आल्सो प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट विद इन द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म के अंदर आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स नजर आ रही है, इट मे बी माइटोकॉन्ड्रिया,
It may be lysosomes, it may be centrosomes, it may be rough endoplasmic reticulum, it may be smooth endoplasmic reticulum, okay, it may be Golgi apparatus. तो आपको प्लांट सेल नजर आ रहे हैं, प्लांट okay बेटे, there is some interruption in between because some of my periods are running continuously. Okay, तो मैं आपको ये बोल रही थी कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कॉक सेल्स जो इनको फर्स्ट टाइम देखा था, एंड आफ्टर दैट ठीक है देयर वाज अनदर साइंटिस्ट एंटनी वॉन लीवनहॉफ, और उन्होंने लाइव सेल्स जो है वो किसके अंदर देखे, माइक्रोस्कोप के अंदर फर्स्ट टाइम जो है लाइव सेल्स जो है उनको उन्होंने स्टडी किया. ओके बेटे, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. एनिमल सेल में आपको क्या नजर आ रही है, सेल मेम्ब्रेन इज देयर but no outer rigid cell wall is there in case of animal cell. Other cell organelles are most probably similar one. Okay बेटे, and इसके अलावा देखो plant cell जो है उसके अंदर आपको in addition to the cell membrane or plasma membrane are rigid and thick. ठीक है, cell wall is also there. Because of this the plant के जो cells होते हैं वो rigidity show करते हैं and animal cells जो हैं वो flexible होते हैं. ओके बेटे, इसके अलावा आपको जो है न्यूक्लियस सेल्स किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर नजर आती हैं, उनके सेंटर में न्यूक्लियस होता है. ठीक बेटे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो कहते हैं कि व्हेन द सेल्स दे वर डिस्कवर्ड, जब सेल्स जो हैं वो डिस्कवर हो गए, तो आफ्टर दैट देयर वर टू अनदर साइंटिस्ट. ठीक है, एंड देयर नेम वाज सिक्लाइडिन एंड श्वान. तो सिक्लाइडिन का फुल नेम था मार्कस सिक्लाइडिन. इन द ईयर 1838, ठीक है, both of these scientists, in which Matthias Cyclidin is a German botanist. ठीक है, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारे प्लांट सेल्स जो उनको स्टडी किया, and what they observed that all of these plants they are composed of different type of cells and tissue. Okay, उसी टाइम पे there was another scientist जो उन्हीं के टाइम पे प्रेजेंट थे and his name was Theodore Schwann. So in the year 1839, same year, okay. But the thing is कि जो Cyclidin थे वो botanist थे and Schwann जो थे वो zoologist थे. तो दोनों ने ये बताया कि एनिमल की बॉडी एंड प्लांट की बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं और वो बॉडी जो है उसको फॉर्म करते हैं. But there is a basic difference between the plant cell and the animal cell, that in the plant cell, in addition to the cell membrane or the plasma membrane, okay, what is present outside the plasma membrane, a cell wall is present, and this cell wall is a rigid one. Okay, and this cell wall it also have a specific type of chemical composition. So generally in case of plants, cellulose, a complex form of the carbohydrate, it actually form this cell wall. But if you are considering the cells of the fungi, then in case of fungi, the cell wall is actually composed of chitin, which is another type of a complex carbohydrate. Okay, but so both of these scientists, Cyclidin and Schwann, they formulated a theory that is popularly known as cell theory. Okay, what are the postulates of this cell theory? तो initially जो है ये एक hypothesis थी, पर बाद में ये theory बन गई. The Cyclidin and Schwann together they formulated the cell theory. And this theory, however, did not explain it as how new cells are formed. ठीक है, तो इन दोनों ने क्या theory दी थी, तो इन्होंने एक theory दी थी कि all living organisms are composed of cells and products of cells. ठीक है, सारे living organisms cell से बने हैं या फिर cell के products से बने हुए हैं. और उसके बाद उन्होंने जो है ये नहीं बता पाए वो कि नए cells जो हैं वो कैसे form होते हैं. तो in the year 1855 there was another scientist and his name was Rudolf Virchow, and Rudolf Virchow he explained that cell divided and new cells are formed from the pre-existing cells. ठीक है बेटे, Rudolf जो scientist थे they have explained for the first time that all the cells they undergo cell division, and when these cells undergo cell division, what happened? New cells are formed. So he has used a common word for this. He called this process as homogeneous cellular. ठीक है, तो उनकी अपनी लैंग्वेज में उन्होंने इसके लिए वर्ड यूज किया homogeneous cellular, which means that cells divide and new cells they arise from the pre-existing cells.
The later he modified the hypothesis that was given by the scientists Kleiden and Schwann, and this hypothesis later becomes it's a cell theory and it attains its final shape. तो उसके बेसिस पे आप इस थ्योरी के अंदर दो पोस्टुलेट आके, फर्स्ट पोस्टुलेट जो था वो क्लाइडेन एंड श्वान के द्वारा किया गया था, and that is कि all living organisms are made up of cells and their products. And another postulate it comes from Rudolf Virchow finding, that is कि all cells they arise from the pre-existing cells. And how they arise from the pre-existing cells? तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जो pre-existing cells हैं वो cell division में जाते हैं, and after this cell division new cells they arise from them. Okay, bete? So this is all about the cell theory. Now these are the postulates of the cell theory, that all living organisms are composed of cells and products of cells, and all cells they arise from the pre-existing cells. तो यहाँ पे देखिए साइड में मैंने आपको कॉर्क सेल्स दिखाए हुए हैं, एंड फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें मैंने आपको एनिमल सेल दिखाया है जिसके अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एंड कॉर्क सेल्स इस तरह से हनीकॉम्ब लाइक अरेंजमेंट शो करते हैं. Okay, but now we are starting with the next one, and that is an overview of the cell. Here I am showing you different type of cells. First picture is of the red blood cells, which are known as erythrocytes. Okay, second picture is of the white blood cells, which are colorless because of the absence of hemoglobin. Okay, then third picture में मैंने आपको animal cells दिखाए हुए हैं, simple columnar epithelial cells. ठीक है, कॉलम लाइक एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी की आउटरमोस्ट लेयर एपिथेलियम को बनाते हैं. एंड फोर्थ में मैंने आपको दिखाए हुए हैं न्यूरॉन के सेल्स व्हिच आर एक्चुअली रिलेटेड विद नर्व फाइबर्स. एंड फिफ्थ पिक्चर में मैंने आपको दिखाई हैं ट्रैकिड्स. ठीक है बेटे, ट्रैकिड्स आप अच्छे से जानते हो किसके सेल हैं, जाइलम के सेल हैं, एंड शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का. एंड देन वी हैव सम ऑफ द सेल्स दैट यू सी इनसाइड द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीव्स. ठीक है, जब आप किसी भी लीफ को ट्रांसफर सेक्शन में कट करते हैं, then you come to know these cells. So okay, some of the cells that are present in the upper epidermis, then some of the cells which are very much closely packed and cylindrical in shape, these are known as the mesophyll cells. और इस तरह के mesophyll cells को palisade mesophyll cells कहते हैं. And some of the mesophyll cells that are present in the leaves, they are loosely arranged. These are known as the spongy mesophyll cells. And जो lower epidermis होती है किसी भी leaf में, उसमें stomata's present होते हैं. Okay, these are the minute pores which are guided by special type of cells which are known as guard cells. So guard cells along with epidermal cells and stomatal pore, they form the stomatal apparatus. तो देखो अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 126 पे देखिए, तो कहता है कि if you want to see the plant cells, अगर आपने प्लांट के सेल्स देखने हैं, then the common material that you used in your laboratory, it is onion peel. ठीक है, आप कोई भी एक अनियन लेते हैं और उसका जो छिलका होता है, उसकी जो पील होती है, उसमें से हल्का सा आपने ट्रांसपेरेंट कवर ले लेना है, एंड उसके बाद when you view it under the microscope, then you see the cells in the form of a honeycomb like arrangement. ठीक है, what do you see? Because these are the plant cells, so there is an outer boundary which is rigid and thick. This is known as cell wall. Next to the cell wall, what you generally see is cell membrane or the plasma membrane. Okay, when you increase the magnification, you are able to see the cell organelle, cytoplasm, and nucleus present inside the cell. Even nucleus is also visible in less magnification too. ठीक है बेटे, तो इस तरह से कहते हैं कि हर एक सेल जो है उसके सेंटर में आपको न्यूक्लियस नजर आता है. पर अगर आपने एनिमल सेल को स्टडी करना है, इन दैट केस you used a very simple material in laboratory, and that is your human cheek cell. ठीक है, आप एक स्लाइड लेते हैं, उसको थोड़ा सा अपनी चीक के साथ रब करते हैं अंदर की तरफ से, तो थोड़ी सी फ्लैश आ जाएगी, स्किन आ जाएगी, उसको आप एक्सपेंड करेंगे, एंड उसके बाद you stain it with methylene blue and observe it under the microscope. You also see the compartments which are known as cells, and inside each of the cell what is present? Nucleus is present. Okay बेटे, तो आपको कहता है कि whether the nucleus have membrane or not. If the nucleus have its own nuclear membrane, and the cell organelles which are also present in the cell, they also have their membranes.
then such type of cells are known as eukaryotic cells. और अगर हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है और ना ही सेल ऑर्गेनेल्स के आसपास सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो अगर हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं तो सेल हमारा यूकैरियोट है। अगर हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट, दिस मींस द सेल इज ऑफ अ प्रोकैरियोट। तो एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज बैक्टीरियल सेल एंड एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके बेटे, इसके अलावा वो कहते हैं कि आपको जो है किसी भी सेल के अंदर एक ग्राउंड सब्सटेंस नजर आता है व्हिच इज साइटोप्लाज्म एंड फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, तो ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो सकती हैं? दिस मे बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, ठीक है। और ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा यहाँ पर हो सकती है ये गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, देन लाइसोसोम्स हो सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम्स। अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच इज अ कॉमन बैक्टीरियल सेल। तो देखिए एक बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको नजर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज द आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन एंड next to the plasma membrane the cell wall is present because bacterial cell have much more similarity with the plant cell। तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है और बैक्टीरिया जो है उसकी सबसे आउटरमोस्ट लेयर जो होती है उसको कैप्सूल कहते हैं, ठीक है बेटे। तो ये जो कैप्सूल्स होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। फिर देखिए इनसाइड द बैक्टीरियल सेल व्हाट यू सी, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट बट द न्यूक्लियर मटेरियल इज देयर, ठीक है। तो न्यूक्लियर मटेरियल में आपके पास क्रोमेटिन फाइबर्स आ जाते हैं। सो these chromatin fibers they are freely suspended in the cytoplasm but they are not scattering in the cytoplasm because these chromatin fibers which actually contains the DNA inside, this DNA it is actually wrapped over some positively charged proteins and DNA itself has negative charge and these proteins which are known as histones they are positively charged proteins. So there is a attraction between DNA and protein, that's why the genetic material is not scattered in the cytoplasm whereas it is accumulated at a specific place which is known as nucleoid, it is known as nucleoid। ओके बेटे, उसके बाद वो कहता है कि आपको माइटोकॉन्ड्रियास भी नजर आ जाती हैं which are the power houses of the cell। आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ जाती है अगर वो प्लांट सेल है। यहाँ पे देखिए बैक्टीरियल सेल में आपको राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, आपको some finger like structures which arise from the cell wall of the bacteria these are known as the villi। villi जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो मैं जल्दी ही आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में बताऊंगी पर उससे पहले देखिए आप प्लांट सेल एंड प्लांट सेल में आपको बिगर वैक्यूल्स नजर आ जाती हैं बिकॉज यू नो दैट प्लांट्स हैव टू डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस and they have to store the photosynthesis and for this purpose they have larger vacuoles। So generally when we differentiate plant and animal cell then you always write the larger vacuoles are present in plant cells and smaller vacuoles are almost negligible in animal cells because they are heterotrophs। ओके बेटे, इसके अलावा आपको प्लांट सेल में नजर आ रहे हैं न्यूक्लियस, आपको नजर आ रही हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेसिकल्स व्हिच आर सर्कुलर ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इट इज लोकेटेड ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दोस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and if ribosomes are not present then it is known as a smooth endoplasmic reticulum। ओके, इसके अलावा आपको पावर हाउसेस सेल के नजर आ जाते हैं which are known as mitochondria and adjacent to the mitochondria Golgi apparatus are there, these are also known as Golgi bodies in honor of the scientist Camillo Golgi who has first discovered this type of apparatus in plant cells। ओके बेटे, एंड प्लांट सेल्स में इसको एक स्पेशल नेम दिया गया है गोल्गी apparatus को, it are known as dictosomes and in case of animal cell they are known as Golgi bodies or Golgi complex, ठीक है। इसके अलावा आपको लाइसोसोम्स नजर आ जाते हैं which are known as suicidal bags of the cell and आपको साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपको प्लांट सेल में नजर आएगा because plants they have chlorophyll pigment which is present in the circular cell organelles which are known as chloroplast and this is actually involved in the process of photosynthesis for light harvesting।
ठीक है बेटे, सी द डायग्राम ऑफ द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में आपको नजर आ रहे हैं राइबोसोम्स, ठीक है, विच आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये किसी भी सेल के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। साइटोप्लाज्म विच इज द ग्राउंड मैट्रिक्स ऑफ द सेल। Cell membrane is the outermost boundary in an animal cell. Then beside this we have lysosome which are known as suicidal bags. Then microtubules are there. ठीक है, what are these microtubules? So these microtubules are the mother cells of cilia and flagella. cilia और flagella जो है वो जिन मदर सेल्स में से अराइज होते हैं उनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, न्यूक्लियोलस आपको नजर आ रहा है, स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज व्हिच आर रोटेटिंग इन द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस, दे आर नोन एज न्यूक्लियोलस। ठीक है बेटे, इसके अलावा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहे हैं। बोथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर देयर। इफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ओवर द सरफेस देन दे आर नोन एज द rough endoplasmic reticulum. If ribosomes are not present they are known as the smooth endoplasmic reticulum. And इसके अलावा Golgi apparatus are also there. Centrosomes are also there. And from these centrosomes, ये centrosomes जो होते हैं इसमें से बाद में spindle fibers arise होती हैं on which the chromosomes they attach themselves. Then mitochondria is there and cell wall is there. Cell wall provide additional rigidity to the, नहीं cell wall is not present. ठीक है बेटा, एनिमल सेल में नहीं होगी, प्लांट सेल के अंदर होगी। यहाँ पे गलती से लिखा गया। ओके, ये आपको यूकैरियोटिक सेल नजर आ रहा है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, दे आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। ऑल द थिंग्स आर सिमिलर व्हिच वी हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। याद रखेंगे न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एंड स्फेरिकल बॉडीज व्हिच आर फ्लोटिंग इन द न्यूक्लियोलस। ओके, spherical bodies which are floating in the nucleoplasm they are known as nucleoli or nucleolus. Clear बेटे? उसके बाद हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आती है, गोल्गी apparatus, साइटोप्लाज्म is there, माइटोकॉन्ड्रिया is there and क्लोरोप्लास्ट is there. बस इतना याद रखेंगे कि सभी सेल ऑर्गेनेल्स की अपनी अपनी सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस की भी अपनी सेल मेम्ब्रेन है, इसलिए ये सेल यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है बेटे, इसके अलावा वो कहते हैं कि और भी कई सारी मॉडिफिकेशंस हमें बैक्टीरियल सेल्स के अंदर नजर आती हैं। तो सेल इनवेल्प के नेम से उनको बोला गया है। इसे सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है बैक्टीरियल सेल में, उसके आउटसाइड जो है कुछ एडिशनल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होती हैं एंड दीस मेम्ब्रेन्स आर नोन एज द सेल इनवेल्प। तो किसी भी बैक्टीरियल सेल की सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग को सेल इनवेल्प बोलते हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक लेयर्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटे, आज हम यहीं तक करेंगे। तो यू हैव टू रीड द चैप्टर up to page number 127. इवन प्रोकैरियोट्स भी हमने कर लिए हैं, आप पढ़ लें 128 तक। ठीक है, we are starting with cell envelopment and its modification. If you have any doubt you can send me your question.